Good morning, one and all. In our previous lecture, we have done practice set 3.1, main question number 5th and main question number 6th. Today we are going to start with main question number 7. Student, in main question number 7, figure is not there. So what we will do? We will read the question and in the basis of given information, we will draw the figure. So student, I'll read the question. In triangle ABC, bisectors of angle A and angle B intersect at point O. So student, we have a one triangle ABC. Bisectors, हमेशा याद रखना बेटा, बाइसेक्टर्स, बाइसेक्ट कभी भी कोई भी बाइसेक्टर किसी भी एंगल को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है. तो वी हैव अ वन ट्राइंगल. वी विल नॉट राइट ए ऑन द टॉप बिकॉज ए बी इज equally half angle. So we will take AB on the base of the triangle. क्योंकि बाइसेक्टर हमेशा एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. वी हैव अ टू बाइसेक्टर, वन बाइसेक्टर ए का है और वन बाइसेक्टर बी का है. सो स्टूडेंट, we will take AB on the base of the triangle because they are equally half angle. So we will write the name ABC. A's bisector is this and B's bisector is this. Intersect at point O. So this is point O. Bisectors of angle A and angle B intersect at point O. So we will draw two bisector. One is AO and second is BO. Or angle C is 70 degree. So we will write here 70 degree. Find the measures of AOB. We will find this angle AOB. We have only one angle's measure 70 degree, which is C. With the help of this angle, we will find angle AOB. Suppose we have one triangle and we have three angles, this and this. We know that the sum of all these three angle is 180. So first of all, we will find out this two angle A or B, and with the help of this, we will find out angle O. So student, we have AO is the bisector of angle CAB. So we will draw this bisector, and bisector हमेशा equal part में divide करता है. So this part and this part is equal to each other. Suppose this is x and x. So x and x, angle A is divide two equal part x and x. Similarly, angle B is divide टू इक्वल पार्ट y एंड y, बिकॉज बाइसेक्टर हमेशा इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड करता है. सो वी हैव CAB, एंगल CAB equals to 2x, x plus x, 2x. Similarly, we have angle CBA, y plus y, 2y. We have a two angles value x, 2x and 2y. So student, CAB और OAB हाफ हाफ होगा एक्स एक्स जो हमने सपोज किया है. सिमिलरली CBOY है और OBAB y है. सो ऑन द बेस ऑफ दिस अज्यूमेशन वी विल find the value of AOB. So let us come with our solution. First of all, we will draw the fair figure of question 7. This is the fair figure ABC and intersect each other at point O. This is x and x. We have assumed this is y and y. So let us start with our solution. Ray AO solution. AO ray AO is bisector of angle CAB. Bisect angle CAB. And ray BO bisects angle CBA. CB and A. Hope you people can understood till over here. We have write only कि ये बाइसेक्टर है और ये एंगल को बाइसेक्ट किया है. Now student, so therefore angle CAO, we have assumed angle CAO is equals to angle
ए बी, बिकॉज रे ए ओ बाइसेक्ट किया है सी ए बी को, जो इक्वल पार्ट में होगा हमने अज्यूम किया है दिस इज एक्स. वी हैव राइट लेट ऑल्सो एंड सेज ऑल्सो. से का मीनिंग भी सेम होता है. वी हैव अज्यूम दैट एंगल सी ए ओ एंड एंगल ओ ए बी इज एक्स. सिमिलरली एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ and angle OBA is equals to each other because bisector divides two angle into two equal part, which is y, and we will write say. We have assumed this x and y, इसीलिए हम let भी लिख सकते हैं, say भी लिख सकते हैं. Further, we have the value of angle CAO and angle OAB XX and CBO and OBA YY. So student, what we will do next, इसको 1 दे देते हैं हम. दिस इज आवर 1. ओके, नाउ नेक्स्ट सी ए ट्राइंगल एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 2x, बिकॉज x प्लस एक्स 2x होता है. सिमिलरली सी बी ए वाई वाई, वाई प्लस वाई इज 2y, y plus y is 2y, give as a second. Now further we will take the whole triangle CAB and the C is 70 degree, CAB is 2x and CBA is 2y. We will use the theorem of sum of the angle of the triangle is 180 and we will find out the value of x and y. So use the theorem. In triangle ABC, in triangle ABC, we know the theorem sum of the angle of the triangle is 180. So angle CAB plus angle CBA equals to plus angle ACB. देखो बच्चा, अगर आप लोग देखोगे तो मिड में एक बार ए आया है, 1 टाइम बी एंड 1 टाइम सी, इक्वल्स टू 180. वी हैव द वैल्यू ऑफ सी ए बी. वी विल राइट द रीजन सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. वी विल पुट द वैल्यू. एंगल सी ए बी इज एक्स, सी ए बी इज 2x. तो इन द प्लेस ऑफ सी ए बी वी विल राइट 2x plus as it is CBA y plus y 2y, and we have right above 2y, plus angle C is 70 degree. So we will put the value of C is 70 degree. 70 over here equals 180 degree. Now फ्रॉम सेकेंड. सेकेंड क्यों? क्योंकि 2x और 2y हमने फ्रॉम सेकेंड से लिया हुआ है. सो स्टूडेंट 70 गोज टू अनदर साइड ऑफ इक्वल, सो इट बिकम माइनस. सो 180 minus 70. So we will write 2x plus 2y as it is equals 180. 70 goes to another side, it become minus 70. So 2x plus 2y equals to 180 minus 70 is 110 degree. Now 2 is over here also and here also. x के साथ भी 2 है, y के साथ भी 2 है. So we will take 2 as a common. We will take 2 as a common. So dividing both the side by 2. So 2x upon 2 plus 2y upon 2. So 2 get cancelled. We will get only x plus y. x plus y equal 110 degree as it is. 110 हम as it is लिखेंगे और 110 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो we will get 55 डिग्री. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 55. हमको ये वैल्यू मिल गई है एक इक्वेशन की. हम इसको थर्ड दे देते हैं. We will give as a third. Now we will take the smaller triangle AOB and apply the same theorem. Sum of the measure of all angle of a triangle is 180 and we will find the angle AOB.
B. So first we will take smaller triangle, triangle AOB. So in triangle AOB या OAB, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB जो हमको फाइंड आउट करना है, AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री. स्टूडेंट इन मिडल एक टाइम 1A आया है, एक टाइम B आया है और 1 टाइम O आया है. वी विल राइट द रीजन. सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. So student, this step is very much important. Angle AOAB plus angle OBA plus angle AOB equals to 180 degree. What we have done, we have put the value of OAB, which is x, on the place of that, plus as it is value of OBA, which is y. We have to put the value of OBA on the place of that, plus as it is, and we want to find angle AOB. So we will write angle AOB as it is equals to 180. So student, अगर आप इक्वेशन थर्ड को देखोगे, so we have a value of x plus y equals to 55. So in the place of x plus y, we will put the value of x plus y. So x plus y, we have 55 degree. So on the place of x plus y, we will put the value 55 degree. So x plus y is 55 degree. So we will write 55 over here, plus as it is AOB as it is equals to as it is, and 180 as it is. Now 55 goes to another side of equal, so it become minus 55. So angle AOB, इसको हम अगर इक्वल के दूसरी साइड लाएंगे तो वो माइनस हो जाता है. सो एंगल AOB इक्वल्स 180 minus 55 degree. So student, angle 180 minus 55 is 125 degree. So we have the value of angle AOB equals to 125 degree, जो हमको find out करना था. Hope you people can understood the solution of main question number 7. You people will write the question, draw the diagram and write the solution step by step. Now main question number 8. Main question number 8 is similar as main question number 7. दोनों एक दूसरे से similar है. If you people have understood the main question number 7, so you can do easily with main question number 8. So student, on the screen 8 question is there and the figure of this is there. Now first I'll read the question. In figure 3.11, this is the figure of this question. Line AB is parallel to CD. AB is parallel to CD and PQ is their transversal. PQ is the transversal of these two parallel line. Ray PT and QT bisector of angle BPQ. Ray PT and ray QT bisect कर रहा है एंगल BPQ को. दैट मीन्स इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है. वी वॉन्ट टू फाइंड एंगल PQD. दिस एंगल वी वॉन्ट टू फाइंड PQT. तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में था कि हमको एंगल O फाइंड आउट करना था. सो हमने एंगल O को फाइंड आउट किया. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 हमको प्रूफ करना है. तो प्रूफ की जगह फाइंड आउट भी लिख सकते हैं और फाइंड आउट की जगह प्रूफ भी लिख सकते हैं. दोनों का मीनिंग सेम होगा. सो इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है एंगल PTQ 90 डिग्री होता है. PTQ 90 होता है. हमको ये प्रूफ करना है. इसका मतलब है कि हमको फाइंड ही करना है, तो वो इजीली प्रूफ्ड हो जाएगा. सो स्टूडेंट, वी विल टेक द रे PT.
PT is divide this and this angle into two equal part. PT is divide PPT and QPT into two equals part, and similarly QT is divide PQT and TQD into two equals part. So we can assume the angle P is X and X इक्वल पार्ट में रे डिवाइड करता है, इसलिए हमने एक्स एक्स अज्यूम किया, और हम क्यू को अज्यूम करेंगे कि वो वाई वाई है। और सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम पूरा ये क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था फाइंड द वैल्यू, एंड हियर इज गिवन प्रूव दैट। सो हमको अगर एंगल टी मिल जाएगा तो वो प्रूव हो जाएगा कि 90 है। सो वी कैन यूज़ द थ्योरम एंड पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू पी टी क्यू। सो कम टू द सॉल्यूशन। रे पी टी bisects angle BPQ. रे पी टी bisect एंगल BPQ बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एंड एंगल रे QT इट बाइसेक्ट्स एंगल PQD इंटू टू इक्वल पार्ट्स, क्योंकि बाइसेक्टर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट, हमको अज्यूम करना है, सपोज करना है, तो हम लेट भी लिख सकते हैं, से भी लिख सकते हैं, सपोज भी लिख सकते हैं, सबका मीनिंग एक होता है। सो वी हैव टू सपोज दैट एंगल BPT इक्वल है एंगल QPT, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल है XX. These both angles are equals to each other because bisects divide angles equally into two equal part. So we will write angle BPT equals to angle QPT, which is X. We have assumed that X, so we will write here say. And similarly angle PQT and angle TQD is equals to each other because ray QT divides BQD into two equal parts. So we will write like this: PQT angle PQT equals to angle DQT equals to y degree. DQT equals to y, and here we will write say and give this as a first. Now angle BPQ, x plus x is 2x, so we will write angle BPQ equals to 2x. Similarly angle PQD y plus y is 2y, so we will write angle PQD equals to 2y. हमको we will give upper side as a 1 and this is as a second. Now student, what we will do, we will take the smaller triangle PTQ. First of all, see here two parallel lines and PQ is transversal of these two parallel lines. So this angle and this angle are interior angle, and sum of the interior angle is 180 degree. We know the property of interior angle, sum of the interior angle is 180 degree. So here we will use the property of interior angle and we can find the value of x plus and x plus y. And whenever we will get the value of x plus y, we will take the triangle and use the theorem of sum of the angle of the triangle is 180, and we will put the value and find the value of angle PTQ. So first of all we will write line AB is parallel to line CD and PQ, line PQ is there transversal. So we will get the interior angle BPQ and PQD. BPQ plus PQD equals to 180 degree. PQD equals to 180 degree. We will write the reason: interior
angle. Interior angle means sum of the interior angle is 180 degree. So here we will use the interior angle property, and we can write the put the value and find the x plus y's value. So BPQ, student, BPQ is XX, that means 2x. So in the place of BPQ we will write 2x plus as it is PQD. PQD is 2y. So in the place of PQD we will write 2y equal as it is 180 as it is. Similarly we will dividing both the side by 2 and we will get the x plus y value. So we will write dividing by 2, we get 2x upon 2 is 2 get cancelled, we can find x. 2y upon y, 2 gets cancelled, we will get y, and 180 upon 2, 180 upon 2 we will get 90 degree, give as a third. Now we can get the value of x plus y is 90 degree. Now what is our last step? We will take the triangle QPT. Triangle QTPQ, and we can use the theorem, sum of that angle of all angle of a triangle is 180, and we have the value of P and Q, x and y. We will use the theorem and we can find easily angle T. So स्टूडेंट चलो देखते हैं कि हमको एंगल T क्या मिलता है. We will take the triangle of TPQ. TPQ, P and Q. We have the value of PQ, x and y. We will write in triangle TPQ or PQT. Now sum of the measure of all angle of a triangle is 180. We will use this theorem on this triangle. So this angle QPT, in middle P is there, plus angle PQT, in middle Q is there, plus angle PTQ, in middle T is there, equals to 180 degree. We will write the reason, sum of measure of all angles of a triangle is 180. Now we have a value of QPT. QPT is x degree. So in the place of QPT we will put x, and in the place of PQT we will put y. So here we will write x plus y plus PTQ doesn't know, so we will write PTQ as it is. PTQ equals to 180 degree from first क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट से वैल्यू पुट करके लिखा है. नाउ स्टूडेंट वी हैव अ वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 90 डिग्री. तो इन द प्लेस ऑफ दैट वी विल पुट 90 डिग्री प्लस PTQ as it is equals to 180 degree. Now 90 goes to another side of equal, so PTQ equals to 180 minus 90. 180 minus 90. So we can get PTQ is 90 degree. So student, जो हमको प्रूव करना था, प्रूव दैट PTQ is 90 degree. So we have solved step by step and we can get PTQ's value is 90 degree. Hope you people can understood well question number 8. So student, write the question, draw the diagram, write the solution step by step. Today we have done 2 question, 7th and 8th. Both the question are same. If anyone have any doubt, any difficulty, just message me and clear out your difficulty. Hope you can understood well. Thank you.